Dear students, myself Punam. Welcome to our channel Heart on Skill Center Hansi. Please like, share this video and subscribe our channel. Dear students, today I am going to explain you list element in HTML language. So here's the definition. HTML lists allow web developers to group a set of related items in list. HTML list allow करती है वेब डेवलपर को कि कैसे ग्रुप करे पर्टिकुलर आइटम्स को एक लिस्ट में. So here's a type of list. Very first is ordered list, second is unordered list, and third one is definition list. So now I explain you one by one. So very first is ordered list. So ordered list in HTML language. Here's the definition of ordered list. Ordered list or numbered list is a list that has numbers or letters in front of each item. Ordered list या numbered list एक ऐसी लिस्ट है जो हर आइटम के फ्रंट पे या तो नंबर डिस्प्ले करती है या लेटर्स. सो ordered list automatically starts with the number 1. अगर हम ordered list में पर्टिकुलर कोई लेटर्स या नंबर्स राइट नहीं करते तो ऑर्डर्ड लिस्ट ऑटोमेटिकली 1 नंबर से स्टार्ट होती है. सो हियर इज द सिंटैक्स फॉर ऑर्डर्ड लिस्ट. OL and you write here list items and closing of OL. So now we see li tag. Li, or you can say we use li to display listed items contained in any of two list types. So li list जो है you can say li display करता है listed items को दो लिस्ट में, that is your ordered list और unordered list. means इन दोनों लिस्ट में, ordered list में और unordered list में लिस्ट की आइटम्स को शो करने के लिए हम li टैग यूज करते हैं. सो एग्जाम्पल OL ऑर्डर लिस्ट का स्टार्ट किया हमने टैग एंड आई जस्ट राइट हियर आइटम्स li दैट इज रेड, li दैट इज ग्रीन एंड क्लोजिंग ऑफ OL. सो नाउ वी सी इट्स सिंपल एग्जाम्पल ऑन नोटपैड एंड आफ्टर दैट वी विल सी इट्स आउटपुट. So dear students, here's a simple example of OL list without any attribute, only just li. So starting of HTML, starting of head, and in between head I just write a title that is use of list in HTML, and closing of head and starting of body, starting of OL, and I write here some items by using li. Red, green, yellow. I just write here colors name and closing of OL tag, closing of body, and last I close the HTML. So very first we save it. Just click on file and click on save option and just write here name of the file. I write here list.html, that is the extension. I give it location, that is desktop, and click on save. So now we see its output. So dear students, is the icon of list, that is now we click it. So is the output. मैंने वहां पे कोई भी नंबर शो नहीं किया था. Just I write there OL and li red, li green, li yellow, and by default किससे start हो गया मेरा नंबर लिस्ट 1 से. So now I describe you some more changes and more attributes of OL tag. So here's a OL element and its attribute. Very first is
start attribute. This attribute specifies the location from where the numbering order starts. For example, we write start is equal to in quotes 102. The ordered list numbering start from 102. तो स्टार्ट एट्रीब्यूट क्या करता है, अगर हम चाहते हैं कि पर्टिकुलर इस नंबर से स्टार्ट करे, कि पर्टिकुलर नंबर से स्टार्ट करे, तो हम जस्ट स्टार्ट एट्रीब्यूट यूज करते हैं विद इन ऑर्डर लिस्ट. सो लेट वी सी इट्स सिंपल एग्जांपल. आई जस्ट राइट सम कमांड्स फॉर दैट एट्रीब्यूट. So just simply I write here start attribute is equal to I give the numbering from 5 and now just I save it. You can see its output. Just save it as usual. We just see its output. I just double click here. So that is the output. जस्ट वहां पे मैंने स्टार्ट किया, स्टार्ट एट्रीब्यूट यूज किया और नंबरिंग स्टार्ट की मैंने 5 से. दैट्स वाई जो नंबरिंग है वो कहां से शुरू हो रही है, 5 6 7. सो नाउ आई डिस्क्राइब यू वन मोर एट्रीब्यूट ऑफ द ऑर्डर लिस्ट. सो हियर इज वन मोर एट्रीब्यूट दैट इज टाइप एट्रीब्यूट. सो यू कैन चेंज द नंबर स्टाइल फॉर ऑर्डर्ड लिस्ट. आप नंबर का स्टाइल ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए डिफरेंट यूज कर सकते हैं और यू कैन चेंज कर सकते हैं बाय यूजिंग द टाइप एट्रीब्यूट. देयर इज सम ऑप्शन दैट इज वेरी फर्स्ट इज ए मीन्स कैपिटल ए. सो स्टार्ट होगी नंबरिंग ABC एंड दैट इज क्या डिस्क्राइब करेगा, डिस्क्रिप्शन इज हियर, दैट इज ये स्टार्ट होगा अपर केस लेटर से. सो नेक्स्ट इज A दैट इज फॉर लोअर केस. तो इसमें आपकी नंबरिंग स्टार्ट होगी ABC दैट इज लोअर केस. दैट इज द अपर केस रोमन नंबर. सो नंबरिंग स्टार्ट होगी 1 2 3 एंड दैट इज द टाइप I small दैट इज 1 2 3 एंड इन लास्ट सीक्वेंस ऑफ नंबर जो शुरू होगा आपका 1 2 3 से. सो लेट वी सी दीज ऑल ऑप्शंस बाय यूजिंग टाइप एट्रीब्यूट ऑन नोटपैड एंड आफ्टर दैट वी विल सी इट्स आउटपुट. सो जस्ट सिंपली आई एड हियर वन मोर एट्रीब्यूट दैट इज टाइप इज इक्वल टू, आई जस्ट वेरी फर्स्ट ऑप्शन मैं यहाँ राइट कर रही हूँ दैट इज अपर केस A. सो क्लोजिंग और स्टार्ट कहाँ से हो, 5th लोकेशन से, मीन्स ABCDE से स्टार्ट हो और कौन सी टाइप आए, अपर केस A. सो वंस अगेन आई सेव इट, जस्ट क्लिक ऑन सेव. नाउ वी विल सी इट्स आउटपुट. सो जस्ट आई सिंपली रिफ्रेश हियर. सो हियर इज द आउटपुट. तो नंबरिंग और यू कैन से ऑर्डर कहां से स्टार्ट हुआ, E से, EFG. सो नाउ आई शो यू वन मोर ऑप्शन. सो जस्ट आई मेक चेंजेस हियर, जस्ट आई राइट हियर स्मॉल लेटर A. सो वंस अगेन आई सेव इट. आप स्टार्ट भी चेंज कर सकते हो, जस्ट आई स्टार्ट हियर फ्रॉम 3, 3rd लोकेशन से स्टार्ट हो जाएगा or you can say C say. Once again I save it. So now we see its output. Just simply refresh. Look, I start it from 3 and type is equal to small letter that is A. So one more option for that. I make the changes here. So just I write here Roman number 1 and location 3. Just once again save it. And now you can see its output. So that is it starts from 3rd location. So I just simply give it lower Roman. So and location भी change कर लेते हैं, यहाँ हम 5th लोकेशन से स्टार्ट करेंगे. And now I save it once again. So just you see its output. That is, so ये लोकेशन स्टार्ट हुई 5th से और नंबरिंग आ गई हमारी लोअर केस रोमन. सो
Now once again we see it, simply just numbering दे देते हैं फिफ्थ लोकेशन से, that is sequence of numbers 1 2 3. तो देखिए आउटपुट क्या रहेगा, जस्ट वंस अगेन सेव इट and see that its output, that is 5 6 and 7. So dear students, this is the OL element, or you can say ordered list in HTML. Now I explain you unordered list. Dear students, here is a unordered list. So here is the definition. Unordered list or unnumbered list is a list with a special bullet symbol in front of each item. अभी लास्ट क्या किया हमने, OL लिस्ट किया, वहां क्या था, नंबर्ड लिस्ट, दैट इज वहां नंबरिंग शो हो रही थी हर आइटम के फ्रंट पे. और यहाँ क्या होगा, अनऑर्डर्ड और अननंबर्ड लिस्ट में जो आइटम्स शो होंगी उन आइटम्स के फ्रंट पे बुलेट्स या पर्टिकुलर सिंबल्स शो होंगे. सो डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ अनऑर्डर्ड लिस्ट इज डिस्क. अगर हम कोई भी पर्टिकुलर अनऑर्डर्ड और यू कैन से पर्टिकुलर उसकी वैल्यू डिफाइन नहीं करते तो बाय डिफॉल्ट अनऑर्डर्ड लिस्ट में ये डिस्क शो करता है. सो सिंटैक्स फॉर दैट, स्टार्टिंग ऑफ यूएल एंड राइट हियर द लिस्ट एंड क्लोजिंग ऑफ यूएल. So once again look, li tag. li tag हमने ordered list में भी यूज किया था, जैसे मैंने आपको डिस्क्राइब किया. We can use it ordered list as well as in ordered list. So just like same जैसे हमने ordered list में यूज किया था li tag को, हम यहाँ unordered list में भी यूज करेंगे. We use li to display listed items contained in any one of two lists, that is unordered and ordered. UL and list item, I write here fruits name and closing of UL. So now I write a simple program by using UL, or you can say unordered list on notepad, and after that we will see its output. So dear students, here is the program for the UL, or you can say unordered list. So HTML, in between head I write a title, and body I just write here UL, that is unordered list. आप यहाँ लिस्ट में कुछ भी राइट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट. आई जस्ट राइट हियर फ्रूट्स नेम, कलर्स नेम, जो भी आई जस्ट राइट हियर फ्रूट नेम. सो दैट इज, एंड इन लास्ट आई राइट हियर एप्पल. सो ये क्या होगा, जस्ट बाय डिफॉल्ट क्या था हमारा डिस्क, बुलेट में क्या शो करेगा, डिस्क. सो वंस अगेन सेव इट. सो लेट वी सी इट्स output. So dear students, just simply click here and see. देखिए क्या है, यहाँ पे सिर्फ बुलेट शो हो रहा है, जो बिल्कुल क्लियर शो हो रहा है आपको. लास्ट हमने क्या किया था, OL जिसमें नंबरिंग शो हो रही थी. अभी हमने यूज किया UL, दैट इज अनऑर्डर्ड लिस्ट. तो बाय डिफॉल्ट यहाँ डिस्क बुलेट शो हो रहा है. सो लेट वी सी इट्स अदर ऑप्शंस. So here is the attribute of UL, that is type attribute. So you can change the bullet style for unordered list using type attribute. अगर आप चाहते हैं कि आप unordered list के जो है आइटम्स के स्टाइल जो है, you can say bullet का स्टाइल है, आप चेंज करना चाहते हैं, तो आप जस्ट टाइप एट्रीब्यूट के साथ ये पर्टिकुलर ऑप्शन यूज कर सकते हैं. These are the options. Bullet style, that is disk, which specifies a filled circle. अगर आप disk राइट करेंगे तो पर्टिकुलर एक सर्कल शो करेगा आपके आइटम के फ्रंट पे. एंड सर्कल, दैट इज नॉन फिल्ड सर्कल, मीन्स यहाँ कुछ भी कलर और जस्ट सिंपली एक आउटलाइन शो होगी आपकी सर्कल की, दैट इज नॉन फिल्ड सर्कल. एंड स्क्वेयर, स्पेसिफाइड अ फिल्ड स्क्वेयर बुलेट. सो लेट वी सी इट्स program on notepad, and after that we will see its output. So dear students, I just make some changes. I write here type attribute
that is type is equal to circle. So now once again we have to save it. Just whenever you make changes, you just save it. So let me see its output. So just simply refresh it. देखिए स्टूडेंट्स, अभी जो बाय डिफॉल्ट था वो डिस्क बुलेट शो हो रही थी और मैंने वहां टाइप एट्रीब्यूट में जस्ट राइट किया सर्कल, तो ये हर आइटम के फ्रंट पे एक सर्कल बुलेट शो कर रहा है. सो लास्ट इज योर्स स्क्वायर. जस्ट आई सिंपली राइट हियर स्क्वायर. ऑप्शन यहां राइट करते हैं स्क्वायर. So once again save it and just result देखिए, रिफ्रेश करते हैं इसे. So देखिए स्टूडेंट्स, जहां हर आइटम के फ्रंट पे एक सर्कल शो हो रहा था, अभी क्या शो हो रहा है? एक स्क्वायर शो हो रहा है. So dear students, that is the UL or you can say unordered list in HTML. So now next I define you definition list. So dear students, here's a one more list, that is definition list. So here's a definition. A definition list is a list without a bullet symbol or any number in front of each item. डेफिनेशन लिस्ट एक ऐसी लिस्ट है जिसमें हर आइटम के फ्रंट में ना तो कोई सिंबल होता है और ना ही कोई नंबर. सो दिस इज, और यू कैन से दिस लिस्ट इज जनरली यूज्ड टू क्रिएट ए लिस्ट ऑफ डेफिनेशन टर्म्स एंड देयर डेफिनेशन. ये लिस्ट जनरली यूज की जाती है क्रिएट करने के लिए पर्टिकुलर डेफिनेशन टर्म्स को और उन डेफिनेशन टर्म्स की डेफिनेशंस को. सो सिंटैक्स फॉर दैट, स्टार्टिंग ऑफ DL एंड जस्ट राइट हियर, you just write here DT and DD. So now I explain you DT and DD. So here's the definition. So you can say DL consists pair of DT and DD elements. DL जो list है वो pair रखती है DT और DDL elements के. So very first is DT. So this element is used to define the term part. ये इस पार्ट में जो हम डिफाइन करते हैं दैट इज पार्ट ऑफ द टर्म. कि टर्म कौन सी है. सपोज अगर हम राइट करें व्हाट इज कंप्यूटर तो हम राइट करेंगे डीटी में, और अगर हमें इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन राइट करना है तो वी जस्ट राइट इट इन डीडी. सो डीडी एलिमेंट स्टैंड्स फॉर डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन. सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ आई राइट अ सिंपल प्रोग्राम ऑफ डी L, and after that we see its output. So dear students, I just simply write a program of DL definition list. So just simply I write here HTML head, and in between head I write a title, and I just start here body, and now DL tag, and now I write here DT, what is computer. So just that is DT or definition term. So that is definition description. So computer is an electronic device which takes input and after processing it gives you desired output. So इस term की जो definition है वो मैंने write की DT में. So here's one more DT. What is mouse and closing of DT? I just write here detailed description here. Mouse is an input device and it is also a pointing device. I just close here DD, and in between क्या write किया हमने, इसको DL के in between हमने दोनों element write किए, that is DT and DD, and I close here DL and closing of body, and in last I close here HTML. So as usual we save it. First click on file and just click on save,
and I just give its location desktop. I write here file name, that is dl.html, which is the extension. Now I save it. So now we see its output. So dear students, here's the icon. I just simply click here and there's the output. देखिए term है what is computer and its description. Another term is what is mouse and its description. So that is DL tag. Dear students, these all are list, that is ordered list, unordered list, and last is your DL definition list. So dear students, if you like our video, please like it, share it with your friends and subscribe our channel Hard Skill Center Hasi, and please press the bell icon so that you can view our new updates.